Yes, hello, Mr. Navid. Let's start your thermodynamics snap for your final JKPSC interview for the post of assistant engineer in public works department. Yes, sir. So you prepared basic thermodynamics. Yes, sir. Basic thermodynamics. सर क्या difference क्या है basic में और advanced? I mean, the application part I haven't covered. You heard about classical thermodynamics and statistical thermodynamics. Classical. B.Tech level में जो हम thermodynamics पढ़ते हैं, that is classical or statistical? Sir, I'm not sure about it. अच्छा, what we study in basic thermodynamics and what different thing we study in advanced thermodynamics? Sir, in basic thermodynamics, we study the laws of thermodynamics. Zeroth law, first law, second law, and some property and basics about the various forms of energy, what is heat, what's work, interaction of system with the surroundings, the properties like enthalpy, entropy, availability, all these properties. And something about phases also, pure substances. Actually, can you give me some relevance, some real life, use of second law of thermodynamics? So heat engines and refrigerators, they are based on the second law of thermodynamics. I mean, the working of heat engine is as per the Clausius, I mean the Kelvin-Planck statement. And the heat pump or refrigerators, they work on the basis of this Clausius statement. Now, with for a heat engine, we define different type of efficiency, like the ideal efficiency, maximum efficiency, reversible efficiency. तो ये तीनों सेम है या डिफरेंट है? Sir, ideal efficiency is for this Carnot engine. It will Ideal, reversible, maximum. So I think ideal efficiency is corresponding to the Carnot engine. Okay. It only depends on the temperature limits. And the reversible efficiency will be that of a reversible engine. I mean, the internal reversibility is there. Carnot is not a reversible engine. So Carnot has internal reversibility as well as external reversibility. So that Carnot is a reversible engine or not? Yes, sir. It's a reversible engine. So it will have different efficiencies, like the ideal and reversible efficiencies will be different or same? No, for Carnot it will be same. And for other engines, like if we talk of Otto cycle, there the ideal efficiency and the actual efficiency will be different. No, I'm not talking about actual. I'm talking about the ideal and reversible. For a auto cycle, ideal and reversible efficiency will be same or different? So they will be different. They will be different. Yes, sir. So how you will calculate the ideal and reversible efficiency of auto cycle? So reversible, for that we have this simple form. If we talk of Otto cycle, The air standard efficiency. air standard efficiency. So air standard and reversible efficiency both are same. Because air standard efficiency depends on the working fluid, and the reversible efficiency is independent of the working. Cannot be same. Yes, sir. They are different. They are different. And what about maximum efficiency now? So, maximum efficiency will be when we will, when the system will be brought to the dead state. Corresponding to that, what will be the efficiency? That will give us the maximum efficiency. So when you will have Carnot efficiency maximum? When the temperature T2 will be equal to the surrounding temperature. T2 equal to the surrounding temperature. Yes, sir. I mean, when we will bring it to the dead state. Is it possible to have 100% efficiency of Carnot engine? Totally. So theoretically it is possible, but practically we cannot have.
because for that the temperature T2 at which we are rejecting the heat, that should be 0 Kelvin, which is not possible. Okay. So you mentioned about the efficiency will be maximum when we will bring the system to the atmospheric condition, dead Yes, state. sir. Why it is known as dead state? So because Atmospheric condition means dead. from that no further work can be extracted from the system. So can you have a negative available energy? Available energy negative. No, sir, it cannot be negative. Mhm. Sir, am I audible to you? Yes, yes, yes. You're the one. I'm getting your voice. Sir, I'm saying available energy cannot be negative. How you can define available energy and what is unavailable energy? Number? What is the difference between available and unavailable energy? Sir, available energy is the maximum amount of high grade energy that we can extract from a low grade energy. Mhm. The maximum amount that can be extracted, and the amount of energy that we have to reject, that will be the unavailable energy. Okay. Now, what you understand by law of conservation of energy? That energy can law of conservation of energy means that energy can neither be created nor destroyed, but we can only convert it from one form to another. That's the first law of thermodynamics. I just suppose there is a piston cylinder arrangement. You are carrying out some combustion. You are getting some work output, mechanical work. Then how you can show the conservation of energy for a piston cylinder arrangement where you are carrying out the combustion and you are getting some mechanical work? So How you can show? we are simply converting the energy of fuel, that Mm-hmm. is the mass flow rate, into its calorific value. Okay. That we are converting into other forms, like heat is being produced, Mm-hmm. some mechanical work is being done. So whatever initial energy we will have for the fuel, that is simply being converted into other forms, mechanical energy as well as heat. So, okay. What is thermometric property? So thermometric property is any physical property that will change with the temperature. For example, if we talk of thermometers, there the thermometric property will be volume, because we are using mercury as a thermometric fluid and it expands when the temperature increases. And similarly, in case of thermocouples, we have voltage as thermometric property, because the voltage will change with the change in temperature. Mhm. Okay. So on the modern thermometry, the modern temperature measuring devices, they are based on two fixed temperatures or single fixed temperature. So I think they are based on two fixed temperatures. One is the triple point of water, and one is the boiling point for water. Why not the ice point and steam point, the boiling point and the freezing point? The earlier one, they were based on those two fixed temperatures. The modern one, they are based on single fixed temperature. And that single fixed temperature is the triple point. I don't know about it. I'll have to check it out. Okay. So can you give me some can you show actually how we can say that throttling is isenthalpic? Navid? On what Tho- assumptions we can say throttling is isenthalpic? yes, sir. So throttling means flow through a very small passage, like Mhm. partially open valve. So area is very small. So that means the Q will be zero. It is the adiabatic process. How it is adiabatic? So because the area for which the area of heat transfer is very small, Okay, so heat transfer is zero. What heat about transfer work? is zero, What about and work? we are not doing any work, or not any work is being done on that Mhm. system. So W will be zero. So if we use the steady flow energy equation, But we are uh, carrying out the expansion volumes. Volume is increasing. We are carrying out expansion.
There is No, no volume. work input, fine. Is there any work output? No, sir, I think work output is 0. So there is no heat transfer, there is no work transfer. Yes, sir. Q is 0, W is 0. Okay. What are the And other assumptions? if we use the study flow energy equation, so Q and Hmm. W will be 0. Also, V1 and V2 will get cancelled out. Similarly, Z1 and Z2 will get cancelled out. So we will be left with H1 equal to H2. Enthalpy is constant. Achha, what will happen when we will carry out the throttling of real gases? The temperature is going to increase or decrease? Temperatures. So it will basically depend on this Joule-Thomson coefficient, mu J, Can you give me some whether it is examples, some positive of or the negative. gases which are having a negative Joule-Thomson coefficient? No, sir, I don't know. Hmm. ठीक है. Molière chart आपने सुना है ना अभी? Yes, sir. Plot between enthalpy and On entropy. Molière chart, if you draw the constant pressure line, you will realize कि they diverge actually Constant in the pressure supernet lines. region. Okay, sir. What is the reason behind that? In Molière diagram, HS diagram, constant pressure line they diverges. Now, what do you understand by subcooled liquid? Sorry, sir. What is subcooled? Yeah, compressed liquid. What do you understand by compressed liquid? So I think if we draw TS plot, then the region before the saturated liquid will correspond to the Achha, subcooled why region. why that liquid region is known as compressed liquid? No, sir, I don't know. What is dryness friction? So it's the ratio of mass of vapor present to the total mass in the wet region. Can you give me one real life example of all different kind of systems we generally consider in thermodynamics, like the open system, adiabatic, okay, kind of further processes, the kind of constant pressure process, break closed system, constant volume process. So can you give me one example of each? Navid? Okay, sir. So I will start with constant volume process. So any rigid Mhm. container that is interacting, but in which heat interaction is taking place with the surroundings, so it's an example of constant volume process. Now coming to constant pressure process, if we Mhm. consider a piston cylinder arrangement in which the piston is free to move and it's frictionless, so when we will start heating it slowly, so it will expand such that the pressure will remain constant. So it's an example of isobaric process. And adiabatic process is uh, if any system is insulated, so no heat interaction will take place. So it's an example of adiabatic process, like free expansion is there, throttling is there. And now coming to isothermal process, uh, so we can say phase change in which temperature remains constant. Okay. 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 Now I think now I can provide you the feedback. Yes, sir. नाविद आप थोड़ा सा लो एनर्जी के साथ आंसर करते हो. आपका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग तो अच्छा है, पहले भी मैंने आपसे इंटरेक्ट किया है. थोड़ा सा Yes, इंटरेस्ट sir. लेना है आपको, एंथुजियास्टिक रहना है. जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हो ना, अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो लाइक सपोज यू आर गोइंग टू मेक सम काइंड ऑफ डील विद एनी अदर कंपनी, यू आर ए सीईओ ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन और आपको किसी कंपनी के साथ टाई अप करना है.
जब टाई अप करना मतलब दोनों के इंटरेस्ट का मैटर होना चाहिए ना। अगर Yes, sir. सिर्फ आपके इंटरेस्ट का है तो बस वो टाई अप नहीं करेंगे। अगर सिर्फ उनके इंटरेस्ट का है तो आप टाई अप नहीं करोगे। आपका जो अभी जो डिलीवरी स्टाइल है वो ऐसा नहीं है कि आप लाइक यू नीड टू शो लाइक यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, है ना। Okay, sir. तो थोड़ा सा उस एनर्जी लेवल के साथ आंसर करना है। टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है आपका। थोड़ा सा आप मेरे ख्याल से शुरू में कंफ्यूज हो गए इन दोज क्वेश्चंस आई आस्क्ड, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स एडवांस। Yes, sir. तो जो थर्मोडायनामिक्स हम बात करते हैं ना बेसिक बीटेक लेवल पे पढ़ते हैं, दैट इज क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम कंटिन्यूम कंसेप्ट की बात करते हैं। तो वी कंसीडर द मैटर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, देयर इज नो वेरिएशन इन दी व्हाट यू कैन से प्रॉपर्टीज विद स्पेस कोऑर्डिनेट्स। So we are considering the continuum Hmm. concept. So continuum concept में we can go with the some kind of pressure temperature measurement. We can go with some kind of average readings. Okay. So no such statistical techniques required to evaluate the temperature pressure. At a suppose there is some fluid is flowing in a particular section. So at that particular section you can attach a temperature measuring device, thermometer or pressure gauge to measure the temperature pressure. But suppose Yes, if there sir. is some kind of continuum concept is not valid, then we need to attach multiple devices, multiple temperature measuring or pressure measuring devices. We need to take their readings. Then we, by applying some statistical technique, we need to take their mean, okay, to evaluate the exact pressure temperature in a particular room. अगर किसी रूम में मान लीजिए जो मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, then by attaching a single thermometer you will not be able to define effectively the temperature of the room. Are you getting now? Yes, sir. तो फिर आपको मल्टीपल थर्मोमीटर्स या प्रेशर Hmm. गेजेस लगाने पड़ेंगे। दैट इज द स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। उस वो हम कब यूज करते हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव अस मोर एक्यूरेट रीडिंग, मोर एक्यूरेट Hmm. रिजल्ट्स, बट दैट इज मच कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो हम जो पढ़ते हैं वो पूरा क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स है, जिसमें Concept. कंटिन्यूम कंसेप्ट वैलिड रहता है। और ये थोड़ा सा आप देख के रखो, अपने मूल्य डायग्राम वगैरह मेरे ख्याल से देखा नहीं आपने, थोड़ा सा कंफ्यूजन था उसमें आपको। प्रोसेसेस आपने ठीक बताए, जो प्रोसेसेस के एग्जांपल मैंने आपसे पूछे वो ठीक थे। टोटलिंग में ठीक है, assumptions ठीक है आपकी। वो जूल थॉमसन कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो टेम्परेचर आपका घटता है, कूलिंग होती है, और जूल थॉमसन कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो टेम्परेचर आपका बढ़ता है। देयर आर सम गैसेस लाइक Yes, sir. हीलियम, नियोन, तो ये जो गैसेस हैं दे आर हैविंग अ नेगेटिव जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो इनका अगर आप क्या Yes, करते sir. हो, मोस्ट ऑफ द गैसेस आर हैविंग जूल थॉमसन कोफिशिएंट पॉजिटिव, रियल गैसेस, बट देयर आर सम गैसेस जो मैंने आपको बताया हीलियम वगैरह, इनका क्या होता है, Negative. नेगेटिव जूल थॉमसन कोफिशिएंट है। तो पहले आपको इनको क्या करना पड़ता है, इनको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इनका टेम्परेचर बढ़ाना है, अगर आपने इनको आपने सपोज आपने एक ही बार में इनको कंप्रेस किया, यू आर कैरिंग आउट द थ्रोटलिंग, तो आपको टेम्परेचर घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कूलिंग करना पड़ेगा, काइंड ऑफ इंटर Hmm. कूलिंग, इफ यू वांट टू फर्दर ड्रॉप देयर टेम्परेचर। ओके, Yes, sir. तो देन आई आस्क्ड यू सम ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड लो से मैंने क्वेश्चन पूछे थे आपसे इंजन के, वो ठीक थे So, आप। what difference between the ideal देखो वो तीन efficiency, ही एक ही तो है नावेद। आइडियल का मतलब क्या होता है, द रिवर्सिबल वन, बिकॉज रिवर्सिबल साइकिल इज द आइडियल साइकिल। जो रिवर्सिबल साइकिल है उसी को क्या बोलते हैं, आइडियल, बेस्ट, मोस्ट एफिशिएंट। वही Yes, सबसे sir. क्या है, मोस्ट एफिशिएंट है। तो कार्नोट जो इंजन है वही कार्नोट साइकिल क्या है, वही रिवर्सिबल है। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, दे आर नॉट रिवर्सिबल साइकिल। कभी सुना उनको रिवर्सिबल बोलते हैं, नहीं बोलते। दे आर नॉट रिवर्सिबल साइकिल, दे आर पार्शियली रिवर्सिबल साइकिल, Partially दे reversible. आर Yes, ओनली sir. इंटरनली रिवर्सिबल। तो उनका जो एफिशिएंसी है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी से। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को रिवर्सिबल एफिशिएंसी नहीं बोलते, कार्नोट एफिशिएंसी को रिवर्सिबल बोलते हैं। तो कार्नोट एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी, रिवर्सिबल एफिशिएंसी, आइडियल एफिशिएंसी एक ही है। अब आपको Okay, कन्विंस क्या sir. करना था, आपको कन्विंस करना था इनमें रिलेशनशिप बना के कि व्हाई हाउ ऑल दीज आर सेम। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बोलोगे, बट आपने यही नहीं बोल दिया कि वो अलग है सर। अगर आप सेम बोलते देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट लाइक हाउ दे आर सेम, what is the like how the ideal efficiency, reversible efficiency, maximum efficiency are same, and Carnot efficiencies. Then you need to convince how we can say that cycle is a reversible cycle, and why the reversible efficiency is the maximum one, because there is no loss of the work taking place in the reversible cycle. Are you getting away? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो वहां से फर्दर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते थे।
बट वो शुरू में ही आप थोड़ा कंफ्यूज थे और आपने वो गलत आंसर कर दिया। तो इस तरह की बेसिक मिस्टेक नहीं करनी है, ये बहुत बेसिक लेवल की मिस्टेक है जो आप कर देते हो कई बार, ठीक है। यस सर। तो अंडरस्टैंडिंग है आपका सब्जेक्ट में, थोड़ा सा एनर्जी लेवल को इम्प्रूव यस सर, आई विल वर्क ऑन इट। एंथुजियास्टिक एनर्जेटिक होकर आंसर करो, और आपका ये इस तरह की जो है मिस्टेक नहीं करनी है आपको ना, ठीक है। एंड गो थ्रू ऑल दोस चार्ट्स, पीटी डायग्राम, एचएस डायग्राम, टीएस डायग्राम। सबकूल लिक्विड क्या होता है, देखो लिक्विड आपको सबकूल में कब मिलेगा, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर प्रेशर इज मोर देन पी सैचुरेशन, देन ओनली वी विल बी एबल टू एंटर इनटू द सबकूल रीजन। सबकूल यस रीजन सर। में आप कब एंटर करोगे, व्हेन द प्रेशर इज मोर देन पी सैचुरेशन। मोर देन, यस सर, एग्जैक्टली। तो तभी तो उसको कंप्रेस्ड बोलेंगे। कंप्रेस मतलब द प्रेशर एट ए गिवन प्रेशर इज टेम्परेचर हाई। इज मोर देन पी सैचुरेशन, हम्म। that's why that liquid is known as compressed liquid, are you getting? यस सर, यस सर। सुपरहीटेड में कब जाओगे, एंड व्हेन एट ए गिवन टेम्परेचर प्रेशर इज लेस देन पी सैचुरेशन। लेस देन। उसको सुपरहीटेड क्यों बोलते हैं, बिकॉज एट ए गिवन प्रेशर द टेम्परेचर इज मोर देन टी सैचुरेशन, इसलिए सुपरहीटेड रीजन बोलते थे। कंप्रेस्ड लिक्विड ओके। को सबकूल्ड क्यों बोलते हैं, बिकॉज एट ए गिवन प्रेशर द टेम्परेचर इज लेस देन टी सैचुरेशन, दैट इज दैट्स व्हाई इट इज सबकूल्ड, आर यू गेटिंग नाउ? यस सर, आई थोड़ा गॉट सा इट। चीजों को रिलेट कर लेना है ना। अगर मैं कुछ और मिस कर रहा हूँ, यू कैन व्हाट्सएप में। आई होप आई यस सर। डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो श्योर सर। टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप थोड़ा सा इन चीजों पे वर्क करो, आई थिंक दैट इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओके ओके, सर, ऑल राइट।